हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज टॉपिक इज म्यूटेशन। तो चलिए जानते हैं म्यूटेशन क्या होता है। आज के टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो हैं व्हाट इज म्यूटेशन, उस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, उसका एक 3D व्यू में म्यूटेशन कैसे वर्क ऑन होता है, उनके कॉजेज या इफेक्ट्स जो पड़ते हैं उनके बारे में जानेंगे और इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है, पॉइंट जो डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज म्यूटेशन। Mutations are the sudden changes in the genotype involving the qualitative and quantitative alterations in the genetic material itself which change the phenotype of an organism, or in simple way we can say mutation is a change in the DNA sequence of an organism. It can result from errors in the DNA replication during the cell division, exposure to the mutagens, or a viral infection. Mutations can result in a new version of the protein and help the organism to adapt the changes in the environment. It can cause the genetic disorders, for example, cystic fibrosis and even the cancerous diseases. They introduce the variations in the morphology, physiology, and behavior among the individual of an population or the species. तो जो हमारा म्यूटेशन है वो दो टाइप का होता है, एक है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन और एक है क्रोमोसोम म्यूटेशन। तो आइए जानते हैं द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में। जैसे मैंने पहले बताया, म्यूटेशंस दो तरह का होता है, एक होता है क्रोमोसोमल, एक होता है जीन म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल या एब्रिविएशन या म्यूटेशन क्या होता है? Chromosomes are the long thread-like structures of DNA that contain a part or all of the genetic material of an organism, as we all know very well. The process of the change in the chromosomes as a result of rearranged chromosome parts and change in the number of individual chromosomes or chromosome set which is present in the genome is termed as chromosomal mutation. ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है इसको हम लोग और जो डिफरेंट नाम से जाना जाता है वो है क्रोमोसोमल एब्रिएशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है ये किस वजह से हो सकती है? इसके जो जो स्ट्रक्चर पे चेंजेस आते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में उसकी वजह से हो सकती है, या फिर एबनॉर्मलिटी जो क्रोमोसोम नंबर में आती है, जो फ्लक्चुएशंस होता है, जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एग्जैक्टली ना होके या 45 या 47 क्रोमोसोम्स होंगे, जो अबनॉर्मलिटी आती है क्रोमोसोम नंबर में उसकी वजह से भी हो सकता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन की प्रॉब्लम। या फिर इसकी कॉज हो सकता है द जेनेटिक जो डिजीज़ेज हो जाती हैं और जो हेरिडिटी की वजह से होती हैं, जो ट्रांसफ़र होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो उसकी वजह से भी ये म्यूटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर। तो ये जो म्यूटेशन था हम लोगों ने क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जाना। दूसरा है हमारा जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन भी कहते हैं। द एबरेशन इन द सिंगल बेस पेयर इज कॉल्ड द जीन म्यूटेशन. इट इज अ टाइप ऑफ अ जेनेटिक म्यूटेशन where the nucleotide base is inserted, deleted, or changed in the DNA or RNA of the genome of an organism. These DNA and RNA are made up of many nucleotides, and there are 5 different molecules that can make up the nitrogenous bases on the nucleotides. That are your cytosine, guanine, adenine, thymine, and uracil. And the letters which are used in the abbreviation of this are CGATU. These gene mutations are sometimes caused by the mutations that spontaneously occur during the DNA replication. अब टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने बताया ये जो म्यूटेशन होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी फर्दर डिवाइडेड है दो में, एज जब चेंज इन द नंबर होता है या चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, तो इस तरह से होते हैं। और जो जीन म्यूटेशन होता है ये भी दो तरह का होता है। एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन जिसमें जो जो फर्दर डिवाइडेड है साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस म्यूटेशंस के बारे में, और एक होता है हमारा एडिशन डिलीशन जिसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग अपने फर्दर स्लाइड्स में इन
डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का जो एक तरह का होता है दैट इज द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम, तो उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम म्यूटेशन, here the rearrangement of the genes or the loss of the genes takes place, and ये जो structural chromosome mutation होती है ये further divided होती है 4 parts में as deletion, duplication, inversion and translocation. तो what is deletion? Deletion is also named as deficiency. In this type of mutation, a small segment of the chromosome is lost completely, and the affected chromosome actually becomes smaller in size as a result of the loss. The second type of structural chromosome mutation is duplication. A fragment of a chromosome after separation remains attached with some other broken fragment, resulting in the addition of one or more genes, as a result of which the organism carries the same gene repeated in its chromosome complement also. The next one is the inversion. Here, a segment of the chromosome gets inverted during rearrangement. A chromosome having the genes, for example, A, B, C, D, E, F, G, H, I, in the linear order, may get the segment D, E, F as inverted. Then, उसकी वजह से जो new arrangement of the gene होगा, that will be in the sequence of A, B, C, F, E, D, G, H, I. तो ये हमारा सीक्वेंस होने वाला है. एंड द लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन इज ट्रांसलोकेशन. So translocation here, the mutation exchange of the chromosomal segments between the non-homologous chromosome, it takes place. तो ये 4 टाइप्स की स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन थी या क्रोमोसोम एब्रिएशन थी. इसको अब हम लोग फर्दर एक 3D व्यू में देखेंगे कि कैसे ये वर्क ऑन होता है. So just moving ahead on the next one, change in the structure of the chromosome. Here we are going to talk about, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले about the deletion, duplication, translocation and inversion structural chromosome के बारे में. तो let's move ahead. Let's start this 3D form of the structural chromosome. As the name says, chromosomal mutation means the mutation of the chromosomes. And how exactly it gets mutated, that can happen in 2 ways. One way is where the structure of the chromosomes gets disrupted, and the other is where the number of chromosomes are different than the usual one in the organism. Now let's go through these types one by one. This is the structure of a typical chromosome. Let's imagine this small part gets physically removed. If it would result in the chromosome getting smaller as its segment is lost, which also means that if the segment had some important genes, then they will also get lost, which can result in the severe abnormalities. Such type of mutation is termed as deletion. This is where the part of the chromosome gets deleted. Now imagine if this particular part of the chromosome gets duplicated, due to which the chromosome length increases. This will also result in some of the other abnormalities in the individual. This type of mutation is called duplication. Now comes the next type. These are the 2 different gene segments. Imagine if they get flipped. Thus, the chromosome will appear in such a manner. This condition is called inversion. Do you think this type of mutation is harmful? Answer: it may or may not be harmful depending on which particular gene get flipped. Now let's take one more chromosome. Imagine a part of this chromosome gets removed and get inserted into another chromosome. What will happen of the result? Both the chromosomes will change drastically. This type of mutation is called insertion. And now comes the last type of mutation. Here, instead of a segment gets inserted to another chromosome, let's imagine a situation where a segment from each chromosome get interchanged. So, one segment will get into another chromosome and vice versa. This kind of mutation also results into abnormalities as both the chromosomes get altered completely.
Any idea what this type of mutation will be named as? Well, it will be called as translocation. All these mutations result in disruption of normal chromosomal structures, which are broadly captured under a single heading, which is categorized as chromosomal aberration. So this was all about the change in the structure of the chromosomes. Now let's move ahead on the next one, that is, जो मैंने जैसे पहले आप लोग को बताया था, जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल होता है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है हमारा स्ट्रक्चरली क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड दूसरा होता है हमारा वेरिएशन इन द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्लॉइडी भी कहा जाता है, या फिर जीनोमिक म्यूटेशन को भी इस नाम से भी बुलाया जाता है. जो हमारी ये प्लॉइडी या जीनोमिक म्यूटेशन होती है, ये फर्दर डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में एज यूप्लॉइडी एंड एनीप्लॉइडी. तो पहले हम लोग बात करेंगे कि यूप्लॉइडी क्या होती है. यूप्लॉइडी व्हेन द वेरिएशन इज थ्रू इंक्रीज इन वन और मोर कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, दैट इज टर्म्ड एज योर यूप्लॉइडी. एंड जो यूप्लॉइडी होती है ये 3 तरह की होती है, मोनोप्लॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी. मोनोप्लॉइडी क्या होती है? मोनोप्लॉइडी व्हेन ऑर्गेनिज्म हैव ओनली वन जीनोम इन देयर बॉडी सेल्स, और इस तरह का म्यूटेशन पाया जाता है. फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरियाज, फंजाई, एल्गी. सेकेंड टाइप ऑफ यूप्लॉइडी हमारी डिप्लॉइडी. इट इज अ characterized by 2 genomes, that is 2n, in each somatic cell of the diploid organisms. And third type of हमारी यूप्लॉइडी जो होती है वो है हमारी पॉलीप्लॉइडी. पॉलीप्लॉइडी इट occurs in the nature or artificially produced. And further this polyploidy is of 2 types as auto and allo polyploidy. तो हमारा ऑटो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? ऑटो पॉलीप्लॉइडी होती है इज द टर्म. उस वर्ड से अगर देखें हम लोग ऑटो, इट इंडिकेट्स दैट द प्लॉइडी इन्वॉल्व्स ओनली वन होमोलोगस क्रोमोसोमल सेट इन इट. एंड फॉर एग्जांपल in the seedless watermelons, the grapes and the seedless bananas are the examples of this autopolyploidy. The next type of polyploidy is allopolyploidy. From the term only, allo, it indicates that the non-homologous sets of the chromosomes are involved here. Now coming on the next type of ploidy, that is your aneuploidy. What is exactly the aneuploidy means? Aneuploidy is when the chromosome number is not exact the multiple of the basic number, but is more or less than the basic number. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए. As we all know कि ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. अगर उन 46 क्रोमोसोम्स की जगह 45 क्रोमोसोम्स हों या 47 क्रोमोसोम्स हों, तो उस केस में एनीप्लॉइडी म्यूटेशन वर्क ऑन करती है. ये कंडीशन होती है एनीप्लॉइडी की. अब एनीप्लॉइडी जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में. 2 तरह की पाई जाती है, एक होती है हाइपोपॉलीप्लॉइडी, एक होती है हाइपरपॉलीप्लॉइडी. तो व्हाट इज हाइपोपॉलीप्लॉइडी, उसके बारे में लोग जानेंगे. हाइपोपॉलीप्लॉइडी इज एनीप्लॉइडी वेयर ड्यू टू द लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इज टेकिंग प्लेस. हाइपोपॉलीप्लॉइडी में यहाँ पर लॉस होता है एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का, तो वहाँ पर हाइपोपॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन पाई जाती है. एंड ये हाइपोपॉलीप्लॉइडी भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में एज मोनोसोमी एंड नलिसोमी. तो मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी इज अ कंडीशन इन विच ओनली वन क्रोमोसोम फ्रॉम अ पेयर इज प्रेजेंट इन द सेल्स रादर दैन द 2 कॉपीज यूजुअली फाउंड इन द डिप्लॉइड सेल्स. फॉर एग्जाम्पल द 45 chromosome instead of the body cells, in the place of 46 they are having the 45 chromosomes only. And जो nullisomy होती है, nullisomy is the loss of both the pairs of the homologous chromosomes, that means 2n minus 2. This is the condition of the nullisomy. Coming on the next type of aneuploidy is your hyperpolyploidy. Hyperpolyploidy क्या है? एडिशन होता है इसमें एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स का, तब हाइपर पॉलीप्लॉइडी पाई जाती है. ये हाइपर पॉलीप्लॉइडी फर्दर डिवाइडेड है 3 तरह की होती है.
एक होती है ट्राइसोमी, एक होती है डबल ट्राइसोमी एंड एक होती है थर्ड टाइप की होती है टेट्रासोमी। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसके हाइपर पॉलीप्लॉइडी। ट्राइसोमी क्या होता है? ट्राइसोमी कंडीशन होती है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन विच अ पर्सन हैज़ 3 कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2, मीन्स 2 complete set of the chromosomes plus a single extra chromosome is present there. एंड ये जो टेट्रासोमी होती है, टेट्रासोमी इज हेयर द 2 complete set of the chromosome plus 2 extra chromosome of one particular set are present there. सो ये फुल कंडीशन होती है टेट्रासोमी की, कैसे म्यूटेशन की कैसे वो पाई जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लॉडी और द जीनोमिक म्यूटेशन। ये प्लॉइडी हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्लॉइडी जो होती है हमारी किस तरह कितनी तो है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होती है यूप्लॉइडी, एक होती है एनीप्लॉइडी। यूप्लॉइडी फर्दर डिवाइडेड है हमारी मोनोपोलीप्लॉइडी, डिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में। पॉलीप्लॉइडी 2 तरह की होती हैं, ऑटो और पॉलीप्लॉइडी। फिर हमारी जो एनीप्लॉइडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हाइपो एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी होती है मोनोसोमी और नलिसोमी टाइप की, और हाइपर पॉलीप्लॉइडी होती है हमारी ट्राइसोमी और टेट्रासोमी टाइप की। अब फर्दर हम लोग बात करेंगे ये जो एनीप्लॉइडी थी वो एक 3D व्यू में किस तरह से वर्क ऑन करती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो लेट्स मूव अहेड। The mutation that involves a change in the number of the chromosomes is called aneuploidy. In literal terms, the word aneuploidy means the presence of an abnormal number of chromosomes in a particular cell. So the carrier's type of the person with trisomy 21 is an example of aneuploidy. Due to the presence of one additional chromosome in the 21st set gives rise to the total of 47 chromosomes in a person. So in place of the normal 46 chromosome, the person has an additional chromosome as shown here to be the precise and additional autosome. This case of the aneuploidy is called as trisomy 21. This is because there are 3 chromosomes in place of 2 in the 21st set. The problem of trisomy 21 leads to a condition called Down syndrome. Now, tell me one thing, what if the number of the sex chromosome alters, or instead of XY, what if an individual has XXY? And is it even possible in the first place? The answer is yes, of course. There can be individuals with an additional X chromosome. This condition is named as Klinefelter syndrome. Such individuals contain both masculine as well as feminine characteristics in them. Now, in the case of females, imagine that in place of addition, there is a deletion of an X chromosome. It means XO. So this individual will have only one X chromosome, and this condition is termed as Turner syndrome. There are few developmental abnormalities in such scenarios. These individuals will have a total of 45 chromosomes only. These were few examples of the aneuploidy that involve autosomes and sex chromosomes. Okay, तो ये जो था अभी तक मैंने बात करी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर और नंबर के बेसिस पे जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है उसके बारे में। तो हमारी जो दूसरी तरह की म्यूटेशन हो जो होती है दैट इज़ योर जीन म्यूटेशन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जीन म्यूटेशन जो होती है वो फर्दर डिवाइडेड होती है 2 में, जैसे मैंने पहले बताया था फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अभी फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन क्या होती है। फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन इज अ जेनेटिक म्यूटेशन विच इज कॉज्ड बाय insertion or deletion in a DNA sequence that shifts the way sequence is read. Here, deletion or addition of the bases causes the gross change in the amino acid sequences of protein because they shift the reading frame of the codons beginning at the site of the mutation. And ये जो frame shift mutation होती है ये further 2 types की होती है, एक होती है deletion और एक होती है इंसर्शन। डिलीशन मीन्स यहाँ पर से एक क्रोमोसोम सेट हमारा कम होगा एंड
इंसर्शन में एक एडिशन होता है, फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन में एक एडिशन होता है क्रोमोसोम सेट में। इसको समझने के लिए हम लोग मूव अहेड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये जो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन है वो किस तरह से वर्क ऑन करती है, कैसे पूरा इसका होल प्रोसेस होता है। जस्ट मूविंग अहेड, each protein has a unique set of amino acids connected together in a chain that is coded for by the DNA. As we know, DNA is copied to make RNA, a very specific sequence of instructions called bases, which are written in the set of threes. Bases are the specific informations used here. The four basic amino acids are uracil, cytosine, adenine, and guanine, which are represented as U, C, A, and G. The order of these bases directs how the amino acids will line up. It means when they start, when they stop, and determine how long the chain will be. So, what happens if things go wrong? Answer is, when such errors occur in the DNA code, it is referred to as mutation. It is of two types, as point mutation and frameshift mutation. Let's come to frameshift mutation, which happens when one or more of the bases are inserted or deleted. Since the bases are read in the groups of three, so their addition or deletion in anything other than multiple of three disrupts the reading frame sequence. When this condition happens, the entire code following the addition or deletion will be read incorrectly. This could result in the wrong amino acid being coded, thereby changing the person's protein's shape and the function. So this was all about the frameshift mutation. Moving ahead on the next type of the gene mutation, that is the point mutation. What exactly the point mutation is? Point mutation occurs when base pair is substituted for another. And these point mutations are of three types as shown here: nonsense mutation, missense mutation, and silent mutation. And the gene mutation whole picture is also shown here, that it is of two types: point mutation, frameshift mutation. जो point mutation है वो ये तीन तरह की होती है, और जो फ्रेम शिफ्ट होती है वो दो तरह की होती है, एडिशन और डिलीशन की. दैट इज़ योर दैट इसके बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं. तो मूविंग अहेड, पॉइंट म्यूटेशन जो होती है एक तीन तरह की होती है. पहली होती है हमारी नॉनसेंस म्यूटेशन. Nonsense mutation here produces the nonsense or the terminators or the stop codons within the coded messages. Therefore, the synthesis of the polypeptide chain is interrupted and the gene in between becomes non-functional or recessive. These terminated codons may be ACT in place of UGA, ATT in place of UAA, or ATC in place of UAC in the mRNAs. The second type of point mutation is missense mutation. When one or more of the codons for a polypeptides undergo the change, so the specific amino acid or few amino acids in the polypeptide chain are different, such a new polypeptide chain may form a modified or a non-functional protein, changing the phenotype of it. And the last type of point mutation is silent mutation, जिसको same sense mutation भी कहा जाता है. जो silent mutation here, the change a codon, but the changed codon also codes for the same amino acid of the polypeptide chain. For example, GCA, it mutates to GCT. It makes no difference because both these codons code for the same amino acid, that is your arginine. So this was all about the point mutation. So let's now see how the point mutation exactly work on in a 3D view. Silent mutation, first one, is a type of mutation in which the sequence of amino acid in a protein remain unaltered without any change in the base pair in the DNA. This can happen only because the genetic code is degenerated, which means that one amino acid is encoded with several different codons. Second type of mutation induced by the base substitution is missense mutation, which results in the formation of protein with a changed amino acid.
The properties of such type of a protein can be maintained, altered, or lost. The third type of mutation in the nonsense mutation, in which amino acid sequences codon is replaced by a stop codon, which signals determination of a translation of and result into the formation of only one fragment of a protein. In exchange to it, the stop codon may be replaced by an amino acid specific codon using a longer chain peptide. So this was all about the point mutation, the different types of mutations, that is your आज तो हम लोगों ने अभी तक बात किया द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. जो म्यूटेशन होती है दो तरह की होती है हमारी. एक होती है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरी होती है हमारी जीन म्यूटेशन. क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी फर्दर डिवाइडेड होती है हमारी आज दो तरह में. एक होती है स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम म्यूटेशन, दूसरी प्लॉइडी म्यूटेशन. फिर हमारी जो जीन म्यूटेशन होती है ये फर्दर डिवाइड होती है दो तरह की. एक होती है पॉइंट म्यूटेशन और एक होती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और उनके डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सब कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने जाना कैसे वो क्या वर्क ऑन करते हैं. मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट वन. अब हम लोग बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन. ये इम्पॉर्टेंट जो म्यूटेशन है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती है और किस में हम लोग का हेल्प आउट करती है. तो पहले हम लोग बात करेंगे वेरिएशन के पर्पज से. म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस variations in the individuals of a population or in the members of a species. The new variations may provide better adaptability to the new environment. फिर हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन में. इवोल्यूशन में कैसे म्यूटेशन का वर्क ऑन होता है. यूजफुल वेरिएशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द म्यूटेशंस आर फेवर्ड बाय नेचर and lead to the evaluation of the new species. In some cases, even a single mutation produces a new variety. For example, the Ancon sheep. This is an example of the mutation which help in the evolution of the new type of species. Next, in the field of agriculture. Here, the new varieties of the cereal, plants, fruits, vegetables, etc. have been developed by the scientists through incorporation of the induced mutations by the treatment with the mutagens. Then in the animal husbandry, here the mutants forms of the pets, domestic animals like your cattle and the sheep have been developed for obtaining better yield of the milk, butter, meat, better variety of the wool and strong varieties of the horse and the mules. The last thing is in the field of the industrial microbiology. What is the work of the mutation is? In the new varieties of the antibiotics are obtained from the new strains of the microorganisms by inducing a new mutation in it. So this was all about the importance of mutation. So here are a few of the questions which I have tried to figure out from the material which is discussed today in this video. So you all can just go through the questions and test yourself. Moving ahead, I have tried to just figure out the answers of the questions which are given in the previous slide. So you all can just go through and check your answers. Thank you so much.